Good morning, students. Welcome to your English online lecture. So, students, myself, Miss Pooja, I am going to teach you the subject English of Standard First. So, students, let us begin with our subject English of Standard First. So, students, are you all ready for learning your subject English? Students, from today onwards, we are going to learn English grammar and composition from our combined book number 2. So, students, as you all have studied that unit 3 and unit 4, we have completed studying from our English Bal Bharti textbook. So, our unit 3 and unit 4, both the units have been completed, that is coming in our semester exam. So, from today onwards, we are going to start with our English grammar and composition. So, I request all the students to open your Navjeevan combined book, term book number 2 of Standard First for learning English grammar. Students, this is the image of your Navjeevan term book, combined book number 2. So, those students who are having their Navjeevan term book, combined book, students, kindly open your combined book number 2 and also carry a pencil in your hand for referring the today's online lecture. And those students who are not having the combined book, you must open your English notebook or else any rough notebook which you are having at present. And students, those who are not having the combined book, they must watch the video carefully and note down the important points which I am going to discuss in our today's grammar topic. As you all know that the grammar topic is in the combined book. It is not there in the textbook. So those students are having combined book, for them it is easy to refer. But those students who are not having the combined book, pay attention to the video carefully till the end. So let us start our English grammar part. So in our combined book, we are going to learn English grammar and composition. English grammar and composition starts from page number 24 to 48 in our combined book. बच्चों, आज से हम इंग्लिश ऑनलाइन लेक्चर में हम ग्रामर पार्ट सीखने वाले हैं, जो कि इंग्लिश ग्रामर और कॉम्पोजिशन है. तो इंग्लिश ग्रामर आपके कंबाइंड बुक में पेज नंबर 24 से स्टार्ट हो रहा है, यानी आपका जो फर्स्ट लेसन नंबर 15 है वो पेज नंबर 25 से स्टार्ट होगा. तो जो स्टूडेंट्स के पास कंबाइंड बुक है वो पेज नंबर 25 ओपन करेंगे. 25. सो स्टूडेंट्स, be ready for learning English grammar and composition. Our today's lesson that we are going to study in English grammar is lesson number 15, describing words. So students, we are going to learn the lesson describing words. So before starting the lesson, I am going to teach you the grammar with examples, definitions, meanings, and then we are going to study the examples in the book. बच्चों,
लेसन नंबर 15 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हमारा ग्रामर का पहला टॉपिक है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कंबाइंड बुक में पढ़ने से पहले मैं आपको इस लेसन का एक्सप्लेनेशन वीडियो के रूप में देना चाहती हूँ, जिसमें मीनिंग्स एग्जाम्पल्स क्लियर होंगे। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट we are going to see the meaning, what is describing words with many examples in the book, and then we are going to solve the questions in the combined book. So students, just keep your page 25 open in your combined book. बच्चों, आपको पेज नंबर 25 आपकी कंबाइंड बुक में ओपन रखना है। हमारा चैप्टर का नाम है, लेसन का नाम है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। सो स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर चैप्टर नंबर 15 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। स्टूडेंट्स, what is describing words? The describing words we are studying for the first time, and you all will feel the topic very interesting, so you have to pay attention to the lecture carefully till the end to understand English grammar topic describing words. बच्चों, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बहुत ही आसान सा टॉपिक है, जिससे आपको समझने के लिए आखिरी तक इस वीडियो को देखना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, लेट अस सी व्हाट इज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. So this is the definition. The definition means the meaning of the describing words. Describing words are that words which describe or tell us information about name, place, animal, thing. बच्चों, डिस्क्राइबिंग वर्ड, अब डिस्क्राइबिंग वर्ड होता क्या है? हमारे लेसन का नाम है डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर दैट वर्ड्स विच डिस्क्राइब और टेल अस इंफॉर्मेशन अबाउट नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। बच्चों, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि हमें डिस्क्राइब करते हैं सेंटेंस में, वाक्य में वो शब्द डिस्क्राइब करते हैं, यानी हमें इंफॉर्मेशन, जानकारी देते हैं नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग के बारे में। वो उदाहरण नाम हो सकता है, प्लेस हो सकता है जगह का, जानवर का नाम हो सकता है, या कोई वस्तु का नाम हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर बेसिकली दैट वर्ड्स विच डिस्क्राइब और टेल अस अबाउट नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग. It describes the action or the doing words in the sentences. So students, describing words means in the lower standard, for example, we are in the first standard, students you all are. So in the first, second, third standard, we are going to learn the describing words. In the higher standards, the name is known as adjectives. बच्चों, छोटे क्लास में इसे कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और बड़े क्लास में इसे कहते हैं एडजेक्टिव्स. तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बेसिकली होते क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स वो वर्ड होते हैं या वो शब्द होते हैं जो कि सेंटेंस में, वाक्य में वो हमें डिस्क्राइब करते हैं कि किसके बारे में ये वाक्य बताया है, मतलब वो क्वालिटी या एक्शन उस वाक्य में डिस्क्राइब करते हैं. तो बच्चों, आपको बिना एग्जाम्पल के इसे अच्छे से समझना, मालूम है मुझे कि इंग्लिश ग्रामर टॉपिक है, तो बिना एग्जाम्पल के आपको क्लियर नहीं होगा. इसीलिए मैंने आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं बताने वाली हूँ.
तो आपको उसे देखते हुए फॉलो करना है. स्टूडेंट्स, आई नो with the definition you will not come to understand, so I am giving you the many examples so that student you can just understand the concept of describing words. For example, describing words example मैंने लिखे हैं जैसे कि pretty, lovely, big, small, old, young, sweet, sour and etc. So students, the describing words are that words. For example, we have studied in the blue color words. You can see that example is given. There are many words in the example such as pretty, lovely, big, small, old, young. So these all words in the sentence are the describing words which are describing about the person, or else it may be describing the place, name, animal, thing, or the person's name, or any of the thing in the sentence. So our describing words are example pretty, lovely, big, small, old, young, sweet, sour and etc. So let us study the describing word with more examples. बच्चों, अब हम एग्जाम्पल्स के साथ ये डिस्क्राइबिंग वर्ड सीखेंगे. सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सी द सेम एग्जाम्पल्स दैट इज गिवन इन योर इंग्लिश कंबाइंड बुक, योर टर्म बुक. बच्चों, हम वही एग्जाम्पल्स देखेंगे और पढ़ेंगे जो आपके कंबाइंड बुक नंबर 2 में बताए गए हैं, लेसन नंबर 15, पेज नंबर 25 पर. तो आपको आपके टेक्स्ट बुक में और वीडियो में दोनों में ध्यान देना है. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज अ टॉल ट्री. बच्चों, पहला सेंटेंस है अ टॉल ट्री. तो यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड कौन सा है? TALL, टॉल. क्यों बच्चों ये डिस्क्राइबिंग वर्ड इसे क्यों कहा गया है? स्टूडेंट्स, व्हाई द टॉल वर्ड इज डिस्क्राइबिंग वर्ड? बिकॉज इन द सेंटेंस अ टॉल ट्री, व्हाट इज डिस्क्राइबिंग? इट इज डिस्क्राइबिंग हाउ द ट्री इज, इट इज टॉल. सो दिस इज योर डिस्क्राइबिंग वर्ड because it is describing the tree, that how the tree is. So how the tree is, students? Tall. So the answer is TALL, tall. You can also just see in your page number 25 of your English combined book. So students, हैव यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट इज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स? बच्चों, आपको समझ में आया होगा डिस्क्राइबिंग वर्ड किसे कहते हैं. अब डिस्क्राइबिंग मतलब वो चीज़ के बारे में जो शब्द जानकारी जिससे हमें मिल रही है, जो डिस्क्राइब कर रहा है, यानी जो चीज़ हमें बता रहा है उस सेंटेंस में, उसे कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड. तो यहाँ पर अ टॉल ट्री, ट्री कैसी है? टॉल है, यानी लंबी है. तो हमें क्या बता रहा है कि ट्री, झाड़ जो है लंबा है, लंबी है. तो उसे हम टॉल को हमने बॉक्स का ब्लू कलर के बॉक्स में आप देख सकते हो स्क्वायर किया है. स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन द ब्लू बॉक्स आई हैव मेड अ स्क्वायर. सो दैट इज योर डिस्क्राइबिंग वर्ड एज इट इज बीन डिस्क्राइब्ड in the sentence that it is a tall tree, a tall tree. So students, now let us see some more examples from our combined book. The next one is a sad boy. Now you can see in the picture also a sad boy. So what is described in the sentence? How is the boy, student? He is sad. So your describing word is SAD, sad. So students, it is very easy, yes or no, to identify the describing words. बच्चों, ये बहुत ही आसान है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स पहचानने के लिए.
क्यों? अ सैड बॉय, बॉय कैसा है? सैड है यानी उदास है। आप पिक्चर में भी देख सकते हो अ सैड बॉय। सो what is being said in the picture? How is the boy? He is sad. So sad is the describing word. Now the next one, a sweet mango. So how is the mango, students? You can see the picture of the mango. How is the mango? A sweet mango. Which word is described? Sweet. SWEET, sweet. So a mango is described sweet. A sweet mango. It is said that a mango is sweet. So the quality of the mango is being described, that mango is sweet. So students, sweet is your describing word. So students, are you all getting the describing words? Okay, let us see some more examples. A lovely frock. A lovely, LOVELY, lovely frock. How is the frock, student? Can you see in the picture? Pink color frock. How is the frock? Frock is lovely. It is pretty, lovely you can say, or else pretty also. Both the answers are correct. In your combined book, a dress is given in number 4. Yes or no? So the answer will be same. You will write a lovely dress. Here I have shown a lovely frock. So students, how is the frock described? Which word is describing? Lovely. How is the frock? Lovely. बच्चों, तो फ्रॉक कैसा है? लवली है, यानी बहुत ही सुंदर है। तो ये क्वालिटी बता रही है कि फ्रॉक लवली है। So students, lovely is our describing word. Now let us see some more example. A small bird. You can turn your page number 26 of your combined book. A small bird. 5th one. In your book you can see, in your combined book, the same example I am showing you through the pictures so that you will understand it very carefully and very well. A small bird. How is the bird, students? Small. So what is described? How is the bird? The bird is small. So here the describing word is small. बच्चों, a small bird. तो bird कैसी है? छोटी है, small है। तो हमारा describing word क्या हुआ? Small हुआ. So you will write a small bird. The next one is a soft bed. You can see the picture of a girl sleeping in the bed. A soft bed. How is the bed, students? The quality is been described that a bed is soft. So a soft bed. SOFT, soft is the describing word. A bright sun. How is the sun, students? Bright. Yes or no? Yes. You can see in the image the sun is bright. बच्चों, sun यानी सूरज, जब हम सुबह गुड मॉर्निंग में उठते हैं तो हम सन को देखते हैं. Yes or no? Sun rises in the morning. So how is the sun? Sun is bright. So कौन सा वर्ड डिस्क्राइब किया है सन के बारे में? बताया है सन इज ब्राइट, अ ब्राइट सन. तो ब्राइट हुआ हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड. लेट अस सी द नेक्स्ट. अ ह्यूज एलिफेंट. हाउ इज द एलिफेंट, स्टूडेंट? ह्यूज. व्हाट इज ह्यूज? ह्यूज मीन्स the elephant is very big animal. Yes or no? Yes. Huge means big. Animal is big, large you can say, and very fat also. Yes or no? Yes. So a huge elephant. बच्चों, huge मतलब बड़ा. Elephant, हाथी कैसी होती है? हाथी huge यानी बहुत बड़ी होती है, huge होती है. तो elephant को
कौन से वर्ड में डिस्क्राइब किया है? ह्यूज। बताया गया है एलिफेंट कैसी है? ह्यूज है। तो हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या हुआ? ह्यूज। HUGE, ह्यूज। सो द नेक्स्ट वन, a clean room. How is the room, students? You can see the picture of the room. It is very clean. Yes or no? Yes. So here a clean room. A room is clean. So you can write in your combined book the answer also in your 9th one, a clean room. CLEAN, clean. Clean room. So the room is described as clean. So the clean is a describing word. An old man. Old. You can see in the picture also an old man. It is describing how is the man? Man is old. बच्चों यहाँ पे man यानी इंसान के बारे में बताया है, व्यक्ति के बारे में कैसे man एन ओल्ड मैन. ओल्ड मतलब उनकी उम्र हो गई है, बुजुर्ग हो गए. एन ओल्ड मैन. सो द कौन सी क्वालिटी डिस्क्राइब हो रही है? ओल्ड. डिस्क्राइबिंग वर्ड है ओल्ड. एन ओल्ड मैन. सो स्टूडेंट्स, हियर आर द एग्जाम्पल्स दैट वी हैव स्टडीड इन आवर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स टॉपिक. सो students from your combined book, now we are going to write the answer that we have studied about the describing words. So let us start. Open your page number 25, carry a pencil in your hand. The same example we are going to study. The first one is already given to you all, a tall tree. Second example is a dash boy. So in the picture, how is the boy looking? Sad. So write the answer SAD, sad. A sad boy. Now third one, a dash mango. How is the mango in taste? Sweet. SWEET, sweet. A sweet mango. Fourth one, a lovely dress. How is the dress? Lovely. So the answer is LOVELY, lovely. Now turn your page, come to page number 26. Fifth one, a small bird. How is the bird? Small. Yes or no? In the picture you can see it is a baby bird, small bird. So write the answer SMALL, small. Sixth one, a dash bed, soft. SOFT, soft. Seventh one, a dash sun, a bright sun. BRIGHT, bright sun. Eighth one, a huge elephant. HUGE, huge elephant. Ninth one, write the answer, a clean room. CLEAN, clean room. 10th one, an old man. OLD, old man. Now come to page number 27. Fill in the blanks by choosing a suitable word from the brackets. Now you can see you have to fill in the blank. In the bracket, two answers are given. We have to choose the correct answer. In the picture also we have to observe the first one. In the sentence, the monkey has a dash tail. The option in the bracket is long, short. So students, what will the answer come? The monkey has a long tail. Yes or no? You can see in the picture. The tail of the monkey is long. Write LONG, long. Second one, Seema is a dash girl. In the bracket, fat,
thin, the answer is given. So how is Seema? Thin. THIN, thin. Thin means दो ब्रैकेट में ऑप्शन है. सीमा इज अ डैश गर्ल. सीमा कैसी है? मोटी है या पतली? पिक्चर में क्या दिखाया है? थिन, पतली है. तो थिन को पतला बोलते हैं, मोटे को फैट बोलते हैं. उसी तरीके से फर्स्ट वन, मंकी हैज़ अ लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल. मंकी की पूंछ कैसी है? लॉन्ग मतलब बड़ी है, शॉर्ट मतलब छोटी है. तो कैसी टेल है? बड़ी है या छोटी है? बड़ी है, लॉन्ग. थर्ड वन, द लेमन इज डैश स्वीट सार. नींबू कैसा होता है टेस्ट में? मीठा होता है या खट्टा होता है? सार. सार मीन्स खट्टा. SOUR, सार. So you will write the answer SOUR, सार. Now fourth one, the dash cat sat on the mat. The option is black, white. Now this you can write it. It is easy. The dash cat sat on the mat. कौन सी cat बैठी है मैट पर? white, black. So the answer is white. आप देख सकते हो white cat है, WHITE, white. Fifth one, I kept my head on the dash pillow. Soft, SOFT, soft pillow. Hard, soft. Option is there. The answer will come soft. Now open your page number 28. The soup is sixth one. The soup is dash. In the bracket there are two options, cold, hot. How is the soup? It is hot. HOT, hot. तो बच्चों सूप कैसा है? हॉट मतलब गरम और कोल्ड मतलब ठंडा. सूप कैसा होता है? गरम, हॉट. सेवेंथ वन, अमित हैड डैश कैंडल ऑन हिज केक. ऑप्शन इज 7, 8. So the answer is 7 candles. You can count the candles also in your combined book. 7 candles are there. 8 one, the giraffe has a dash neck. In the bracket, long, short. So you know the giraffe animal, it has a long neck. So the answer will come long, LONG, long. 9th one, the dash boy played with his dog. The big boy, little boy. There are two options. So how is the boy in the picture? You can see the boy is little, means small. LITTLE, little. 9th one answer. 10th one, this is a dash room. Neat, untidy. Neat मतलब आप देख सकते हो 10th one पिक्चर में रूम कैसा है? नीट यानी साफ सुथरा है, अनटाइडी यानी गंदा है. तो कैसा है रूम? नीट यानी साफ सुथरा, क्लीन है. नीट, NEAT, नीट. 11th one, the dash apple is on the table. Blue, red. Now what is the color of the apple, students? Red. So the answer will come RED, red. 12th one, Raj has a dash kite. New, old. There are two options. You can see in the picture, Raj has a new kite, NEW, new. So we have completed from a combined book our describing words, chapter number 15. So in your combined book you have to complete page number 25, that we have done 26, 27 and 28 in your homework. And those students who are not having the combined book, they will write in any of the English notebook or else rough notebook. So students, those students are having the book, combined book, they will complete page number 25, 26, 27 and 28. And those students who are not having the combined book will write in their English notebook. Now students, I would like to just tell you one thing, that on page number 29 of your combined book, you can see page number 29 was the homework of your Ganesh Utsav holidays. It was a composition, chapter number 16, my favorite animal.
So that students, those who have not completed in the Ganesh Utsav holiday homework, they will complete it now. It means after completing your chapter number 15. So in the next online lecture, I am going to start with the lesson number 17. So students, those who have not completed the lesson number 16 in your combined book, just complete that composition. And also the today's chapter that I have taught you all, the describing words. So in the next online lecture, I will continue from direct lesson number 17 onwards. Thank you for watching today's online lecture. Stay safe, stay healthy, stay home.